Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you're all well. Can somebody please confirm to me if my voice is clear? Can you hear me? Can you hear me clearly? Okay, good. All right. So remember yesterday what we did was we covered the mensuration concepts once. Today what we're going to do is we are going to do a few questions on mensuration ताकि हमारी इसकी थोड़ी सी practice हो जाए. Okay, so I have a couple of questions lined up. So we will be having a look at these questions and we'll see how to solve these questions. So first of all, we've got a cylindrical open container. So it says it's an open container. Open container का क्या मतलब है? इसका top जो है that's open, right? तो इसका जो top वाला ऊपर वाला circle है, this is open. It has a diameter of 21 centimeters. The diameter is given, that is 21 centimeters, and you have a height of 8 centimeters. Okay, so diameter is there, you've got the height of the cylinder. You have to find the total external surface area of this container. Total external surface area of this container. Now think about this. Surface area क्या होता है? Remember we talked about this yesterday. आपके जो outer faces हैं, उन सब के एरियाज को आपने टोटल करना है. ठीक है, अब इस सिलेंडर के आउटर फेसेस कौन कौन से होंगे? वन फेस इज दिस कर्व सरफेस. ये जो आपको एक कर्व सरफेस नजर आ रहा है, दिस इज वन फेस. ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है. तो वन थिंग दैट यू नीड इज द कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, एक आप कर्व सरफेस एरिया चाहिए. व्हाट एल्स? यू गॉट टू सर्कल्स. एक तो ऊपर सर्कल है इस सिलेंडर का और एक सर्कल नीचे है बॉटम के ऊपर. ठीक है, सर्कल यहाँ पे नीचे बॉटम के ऊपर है लाइक दिस. लेकिन क्योंकि ये सिलेंडर जो है इट इज ओपन, दिस कंटेनर इज ओपन फ्रॉम द टॉप. इसका मतलब है कि ऊपर वाला सर्कल हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये जो नीचे बेस वाला सर्कल है दैट विल बी काउंटेड. तो एक तो हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, दूसरा हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस सर्कुलर बेस. एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, ये दो चीजें हमें चाहिए. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? दैट इज 2 पाई r into h. ठीक है, 2 into पाई. पाई की वैल्यू आप कैलकुलेटर वाले यूज कर लेंगे. 21 is the diameter, so the radius is going to be 10.5, half of that, multiplied by the height is 8. यहां से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर. Okay, so what do you get? Anyone? What is the curved surface area of this container? 2 pi into 10.5 into 8. What do you get from this? 2 pi into 10.5 into 8. That turns out to be 527.7 for me. So this is 527.7 for me. Acha, what about the area of the circular base? Base तो एक circle है. सिलेंडर है ना, सिलेंडर की दोनों साइड सर्कुलर होती हैं, ऊपर से ओपन है, तो हमें बेस का एरिया फाइंड करना है. बेस का एरिया क्या आएगा? दैट इज पाई r स्क्वायर. ठीक है, सो दैट्स पाई into 10.5 का स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू सम वैल्यू एज वेल. सो दैट्स 10.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई, एंड दिस इज 346.4. This is the area of the circular base. ठीक है, अब टोटल एरिया आप इसको सम करके फाइंड कर लेंगे. The total surface area, the external surface area, that turns out to be the sum of these two numbers. इन दोनों को सम कर लें तो आप देखें क्या आता है, plus 527.7, and this turns out to be 874.1 for me. So ये जब आपको टोटल आता है, that is 874.1 centimeter square. So that is what your result here is going to be. Does that make sense? Any issues with this? Any problems? Any problems, anyone? You clear? Okay, good. Let's look at the next part of this. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है? It's going to take some time to load. Then it says there's a manufacturer that receives an order for 3,000 containers. उसने पीछे container दिखाया आपको. There's a manufacturer that receives an order for 30,000 containers. In fact, 30,000.
he needs an extra 150 centimeter square of material for each container to cover the wastage. Calculate the area of material needed to make these containers. Give your answer in square meters. So how do we think about this? आपके पास पीछे कंटेनर था, उस कंटेनर का एरिया हमने कितना निकाला है? एक्सटर्नल सरफेस एरिया. The external surface area of this container is 874.1. So almost, that's 874.1 for one of those containers. अब ये मैन्युफैक्चरर है, तो उसको क्या मिला? उसको आया कि he receives for 30,000. He received an order for 30,000 containers. ठीक है. अब हर कंटेनर को मैं आपको कितना मटेरियल चाहिए होता है? कितना मटेरियल चाहिए होता है? 874.1 स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतने मटेरियल से वो कंटेनर बनता है, राइट? बिकॉज देखिए हमें सरफेस एरिया निकाला है ना. इस कंटेनर में क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज द कर्व्ड पार्ट. इसमें मटेरियल यूज हो रहा है और आपकी बेस के अंदर मटेरियल यूज हो रहा है. तो ये टोटल मटेरियल जो यूज हो रहा है दैट इज 874.1. तो उसके साथ वो क्या कह रहा है? हर कंटेनर में ना आपकी कुछ वेस्टेज होती है. आप कोई भी आपके प्रोडक्ट बनाते हैं ना किसी मटेरियल से, तो कुछ चीजें फॉर एग्जांपल कटिंग के अंदर कोई चीजें वेस्ट हो रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर कंटेनर में ना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि हर कंटेनर के अंदर टोटल कितना मटेरियल चाहिए हमें? टोटल कितना मटेरियल लगता है? 874.1 प्लस 150. ये जो हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा यहाँ से, this is 1024.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको टोटल मटेरियल चाहिए है फॉर एवरी कंटेनर. दिस इज द मटेरियल नीडेड फॉर एवरी कंटेनर. ठीक है, मटेरियल नीडेड फॉर ईच कंटेनर. इतना आपको मटेरियल चाहिए. अच्छा, उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ मटेरियल नीडेड टू मेक दीज कंटेनर्स. गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर्स. अच्छा, 30,000 कंटेनर्स चाहिए, है ना? हर कंटेनर कितना लेगा? 1024.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है? टोटल मटेरियल कितना चाहिए होगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1024.1. एक कंटेनर के लिए इतना है 1024.1. 30,000 कंटेनर्स के लिए कितना होगा? 30,000 multiplied by this, and that will give you a result that is in centimeters square, and that turns out to be 30721817.7 for me. It's a pretty big number, and this is centimeter square. उसने आपको क्या कहा है? You have to give your answer in meter square. आपको मीटर स्क्वायर के अंदर आंसर देना है, ठीक है? नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, यू नीड मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Does anyone have an idea about that? सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये कन्वर्जन है, ठीक है? वो तो फाइंड कर लिया एरिया कितना है, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे? सो रिमेंबर 1 मीटर के अंदर आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 centimeters, right? 1 meter has 100 centimeters. What about 1 meter square? हम दोनों sides को square कर दें. We have 1 meter square, that is, अब 2 zeros और लग जाएंगे. 100 का square क्या होता है? That is 10,000 centimeter square. ठीक है? तो 1 meter square is the same thing as 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको क्या चाहिए? आपको देखना है कि 30721817.7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है. इसको आप किस तरह से मीटर में कन्वर्ट कर दोगे? यू विल से लेट्स डिवाइड इट बाय 30721817.7 डिवाइडेड बाय दिस 10,000 दैट वी हैव हियर. 10,000 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है? आपने इस तरह भी, अगर आपने इस तरह किया हुआ दैट्स फाइन. अगर आपने उस तरह इस तरह किया, 1 मीटर इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर विल बी 10 raised to power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपने उल्टी कन्वर्जन करनी है, आप इससे डिवाइड कर दोगे. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, तो बड़े यूनिट के अंदर जाना है, उसको आप डिवाइड करते हो. सो यू कैन सी व्हाट दिस टर्न्स आउट टू बी.
जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, this is 3072.2. 3072.2. This is the total material that you need in meter square. Okay, is this clear? Is this clear to everyone? So it would help if you don't want to write, you can at least, just use those smiley faces that you have there on your screen. So if you understand, you can, just click on the happy face. If you don't, and if you have a question, you can click on that sad face. So I understand, so I can move on from there. Okay, good. Let's look at the next part of this. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है? Calculate the area of the shaded shape ABCD. अच्छा, वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुई भी. Just give me seconds. Wrong page. Yeah, sorry about that. So this is the wrong page. Let me copy that again. Yep. Okay. Now there is a shape ABCD that is used to make a lamp side by copying the wrong person from there. Let's go import होने में time लगता है. Okay, yeah. So let's think about this. So this is part B of that. So we had that container earlier. ठीक है, जिसका हमने ये एरिया निकाला है. एरिया निकाला है, इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकाला है यहाँ पे. What was the external surface area of that container? We found that to be 874.1 centimeter square, like that. And then we looked at how much material we would need for that if we were to have 30,000 containers. Now in part B it says there's a circular top that can hold 4 hemispherical balls can be placed in the container. So there's a circular top that can hold 4 hemispherical balls. It can be placed on the container. So we're talking about hemispheres here. The top of a circle is a circle of diameter 21 centimeters with 4 circular holes of diameter 7 centimeters. That the top is a circle that has diameter this 21 with 4 circular holes of diameter 7 centimeters. आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे the circular holes here of 7 centimeter each. A hemispherical ball of diameter 7 centimeter fits into each hole. अब देखिए वो जो पहले वाला कंटेनर था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, उस कंटेनर को ये जो फर्स्ट फिगर है यहाँ पे, इस फिगर को आप ऊपर से देखो ना, टॉप से. So that's what is written here. If you look at it from the top, you've got this thing. You've got a big circle. ये आप सिलेंडर को ऊपर से देख लो. This is its outer circle. This is that circle, the outer circle. उसके अंदर you've got these smaller circles. छोटे circles 4 नजर आ रहे हैं, which have 7 centimeters as their diameter. Okay. और इन circles के अंदर आपने क्या किया है? You have put hemispherical balls of diameter 7 centimeters. यहाँ पे third figure के अंदर नजर आ रहे हैं ये hemispherical balls इसके अंदर रखते हैं like this. Okay. The cross section shows 2 of these balls. ये आपको यहाँ पे cross section वाले figure के अंदर side से नजर आ रहे हैं. एक ball ये इस तरह से है, दूसरा इस तरह से. Right. That's what this is all about. Now it says calculate the inside curved surface area of one of these hemispherical balls. Inside curved surface area of one of these hemispherical balls. ये आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है? This is the hemisphere. आपको क्या करना है? सिर्फ इसका curved surface चाहिए. Curved surface का क्या मतलब? ये जो side वाला part है, that's this part here.
only need this curved surface. अब curved surface का formula क्या होता है? For a sphere, sphere का जो curved surface होता है, that is 4 pi r square. Sphere का curved surface क्या होता है? Outer surface area जो होता है, that is 4 pi r square. तो हेमिस्फीयर का क्या आएगा? हमने कल देखा था, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है that is 2 pi into r square. 4 pi r square को 2 से डिवाइड कर दें, that gives you this curved surface area 2 pi r square. अब आपको क्या करना है? You say this is 2 into pi. What is the radius of the hemisphere? अगर diameter 7 है, radius is going to be 3.5, so that's 3.5 का square. That will give you the result 2 pi and 3.5 whole square. You see what that turns out to be, 2 into pi into 3.5 ka square, and this is coming out to be 76.97 for me. So this is 76.97 centimeters square. That is what you get here. Okay, 76.97 centimeter square. आपको सिर्फ क्या करना था, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना था for a hemisphere, for one of these hemispheres. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं? Let's think about the next part of this. Okay, then we have to calculate the total surface area of the top of the container, including the inside curved surface area of each ball. Okay, now let's think about this. Now this is slightly tricky. So हमारे पास देखें पिछली फिगर क्या थी? It looked something like this. इसका आपको ये टॉप का ये आपको एरिया चाहिए पूरा, लेकिन इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं आपके पास? एक तो आपके पास ये वाला रीजन है, that is outside of these 4 circles. मैं आपको ब्लू में यहाँ पे शेड कर रहा हूँ. This is the area that is outside of these 4 circles. ठीक है, ये वाला सारा एरिया, एक तो ये पार्ट है. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है आपको. इसके साथ साथ ये जो सर्कल्स हैं उसके अंदर छोटे वाले सर्कल्स, ये असल में क्या है? These are these hemispheres जो आपको सेकंड फिगर में नजर आ रहे हैं, ये आपके ये hemispheres. तो आपको हेमिस्फीयर्स का टोटल एरिया निकालना है. एक का तो 76.97 था. What about 4 of them? इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 76.97 into 4. और फिर बाकी जो एरिया यहाँ पे आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये इसके अंदर ऐड कर दो. That will be the total surface area of the top that we have there. हमें क्या करना है? Total surface area of the top. टॉप के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? एक सर्कल, बाहर वाला पार्ट, ये 4 अंदर सर्कल्स था इसके, तो उसके बाहर वाला पार्ट, that's this region, the outside region, ये चाहिए. और दूसरा में चाहिए inside curved surface area of each ball, वो हमने उसमें ऐड कर देंगे. Curved surface area तो हमने निकाल लिया पहले, so let's start with that. Curved surface area of 4 balls. ये जो इन balls के अंदर वाले एरिया वो निकाल लेते हैं. That's 4 multiplied by this number that we had here in the previous part, and that was 76.97. 4 को 76.97 से multiply किया, you will get that curved part. ठीक है, let's see what that is. This turns out to be 307.9 for me. ठीक है, ये मेरे पास आ गया curved surface area of these spheres, ये जो अंदर वाले part है. So that's this region here, जो इनके अंदर वाला ये रीजन है, जो सर्कल, छोटे वाले सर्कल्स के अंदर वाला रीजन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल उसका. Now what about the outer region? वो कैसे निकालेंगे? Now what we can do is we can break it down into a big circle. एक तो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? What we can do is area of big circle, that's this outer circle. ये जो पूरा वाला बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, minus the area of 4 small circles. छोटे वाले जो 4 सर्कल्स हैं उनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से. ठीक है, that is what we have to do there. So what does that give us? Big circle के एरिया क्या होएगा? That is pi r square. रेडियस, उसका डायमीटर बड़े वाले सर्कल का, रिमेंबर इसका डायमीटर वाज 21. जो अंदर वाले सर्कल्स हैं उनका एक का डायमीटर इज 7.
ठीक है. So we say pi into 10.5 का whole square, that is half of 21. हमारे पास बड़े सर्कल का एरिया हो गया, minus area of 4 small circles. 4 multiplied by pi into, अब छोटे वाला के रेडियस क्या था 3.5, so pi into 3.5 का whole square, and that will give us some result as well. So let's see what this gives us. 10.5 square into pi minus 4 into pi multiplied by 3.5 square, and that gives me 192.42.4. अब मेरे पास दो एरियाज आ गए, ठीक है. एक एरिया वो था जो उन कर्व सरफेस एरियाज का था, दैट वाज द टोटल ऑफ दोस कर्व सरफेस एरियाज, एंड देन आई हैव दिस आउटर रीजन जो उनके बाहर वाला रीजन है जो मैंने ब्लू में यहाँ पे नजर आ रहा है. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे and that will be the total external surface area, total surface area of the top of the container. That will be the total surface area of the top of the container. दोनों को ऐड करते हैं, 307.9 plus 192.4, and that gives me 500.3. This is 500.3 centimeter square. That is the area that we have here. Okay. Achha, then it says, with the top and the 4 balls in place, calculate the volume of water required to fill the container. Okay, so think about this. We have the top in place and the 4 balls in place. हमें volume of water find करना है that is required to fill the container. Now let's go back again and think about how the water inside this container will look like. So we're looking at the first figure here. It's a cylindrical container. This is a cylindrical container. Volume कितना आ सकता है एक सिलेंडर के अंदर? जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होएगा, that is pi r square h. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर. अगर ये सिंपल सिलेंडर होता, this would have been simple pi r square h. लेकिन अब मसला क्या है? We have 4 hemispheres like this. हमारे पास ये हेमिस्फीयर्स नजर आ रहे हैं इस तरह के 4 हमारे पास उसके अंदर सिलेंडर के ऊपर लगे हुए हैं. We have 4 hemispheres like this. यानी कि बाकी जो हमारे पास वॉल्यूम बचेगा, जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगा ऑफ द सिलेंडर, we will have to subtract from that the volumes of these 4 hemispheres that we have. We have one hemisphere here, we've got another hemisphere here, another there, and another there. इनके जो वॉल्यूम्स होंगे उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा because they are reducing the space in that container. ये जो हेमिस्फीयर्स हैं उनकी वजह से आपकी स्पेस जो है टोटल वो कम हो जाएगी. So we have to subtract the volume of these. I hope that makes sense. So हमने करना क्या है यहाँ पे? We essentially have to find the volume of this cylinder. Cylinder का वॉल्यूम पूरे का minus volume of the 4 hemispheres that you have there. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं. और रेडियस क्या है सिलेंडर का? दैट इज 10.5, और हमें हाइट पता थी, हाइट वाज 8, बिकॉज ये वही सिलेंडर जो पहले पार्ट से चला आ रहा है. फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं वहां पे जो सिलेंडर था, we have the height given, that was 8. Okay, so we use that height here. That is 8 minus volume of 4 hemispheres. ठीक है, so 4 hemispheres हैं, 4 से multiply करना है किसको? Hemisphere का volume क्या होता है? Sphere का volume is 4/3 pi r cube. Sphere का ये होता है. ठीक है, Hemisphere का क्या होगा? इसको 2 से divide कर देंगे, that will be 2/3 pi r cube. हमने यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इनपुट करते हैं 2/3 into pi into radius of the hemisphere. Radius क्या हेमिस्फीयर का? 3.5, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, सॉरी, pi r cube, so 3.5 का cube, and that will give you the result here. Okay, so what we do is we say 8 into 10.5 का square into 8, sorry, pi into 8.5 का square, pi into 10.5 का square into 8 minus 4 into 2 divided by 3 into pi
into 3.5 का cube. ठीक है, so this turns out to be 2,412 for me. So that is the volume that we have here, 2,412 centimeter cube. This is the volume of water that can come inside that container. Does this make sense? Is this clear to everyone? Any issues with this? No issues? Okay, so I see somebody saying they don't understand. So I'll need an exact question कि क्या exactly नहीं समझ आया वहाँ पे. So let me explain what the figure was like. So it's like a cylinder, remember? So the figure is like a cylinder. इस तरह का एक cylinder है that has, you know, this shape here, like this. We have this cylinder. ये cylinder है. इसके अंदर आपने देखना कितना वॉल्यूम आ सकता है. अगर तो ये पूरा सिलेंडर होता तो then we would say कि this is just pi r square h like this. ठीक है, टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का तो ये होता है. But the problem here is inside that cylinder we've got 4 hemispheres. तो अगर मैं एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करूं, इस तरह के मेरे पास 4 हेमिस्फीयर्स इसके अंदर इस तरह लगे हुए हैं that are reducing the space available in that cylinder. एक हेमिस्फीयर, you know, maybe looks like this. ठीक है, this is the hemisphere. अब हेमिस्फीयर का रेडियस इसने दिया हुआ है. The radius is, diameter is 7, so the radius is going to be 3.5. तो इस तरह के we've got 4 hemispheres. ठीक है, अब इनकी वजह से आपका वॉल्यूम जो इस सिलेंडर के अंदर है, जो उस कंटेनर के अंदर है, वो कम हो रहा है. ठीक है, बिकॉज ये काफी ज्यादा स्पेस तो ये हेमिस्फीयर्स लिए जा रहे हैं, बट डिजाइन ही ऐसे है कि हेमिस्फीयर्स कुछ स्पेस आपकी कम कर रहे हैं. अब वो कितनी स्पेस कम कर रहे हैं? एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होएगा? That's 2/3 into pi into 3.5 का whole cube. That's the formula for the volume of a hemisphere. अब क्योंकि वो 4 हेमिस्फीयर्स हैं, we multiply this by 4. हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. इनके पूरे का वॉल्यूम को हम उसमें से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे and we will get this result from that. Is that okay? Does this make sense? Okay, good. Now let's look at another one. So we've talked about one part in which we were dealing with a sphere and a cylinder. Let's think about something different now. So is this readable to everyone? Everyone please tell me, is this readable? The figure on the screen, can you read this? Or is it too small? Okay, now what do we have here? We have a pyramid here. So we have a pyramid, and how we can recognize a hemisphere or a circle? Acha, Abdullah, let me go back there. So let me quickly go back there. उसने आपको बताया हुआ है ना. So circle तो 2 dimensions के अंदर होता है. Circle is like this in 2 dimensions. अगर वो फिगर में दिया हुआ तो circle will look like this, or hemisphere will look like this. क्या वो बॉल की शेप में होता है हेमिस्फीयर. आपके पास एक थिंक ऑफ अ टेनिस बॉल और अ क्रिकेट बॉल, उसको आप दरमियान से कट कर दो, बिल्कुल मिडिल से. दैट इज अ हेमिस्फीयर. अब यहाँ पे उसने आपको एग्जैक्टली वो फिगर दी हुई है बेसिकली. So if you look at the figures here,
उसने आपको बताया हुआ है ये साइड व्यू है, ये जो पहला वाला है ना कंटेनर, इस साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं तो हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो सर्कल होता है, हेमिस्फीयर का जो टॉप है वो सर्कल होता है ना, तो यहाँ पे सर्कल्स नजर आ रहे हैं क्योंकि हम हेमिस्फीयर का सिर्फ टॉप देख रहे हैं, वी ओनली हैव दिस टॉप विजिबल फ्रॉम द साइड इन दिस फर्स्ट फिगर, इसलिए आपको पहली फिगर में वो सर्कल्स लग रहे हैं, सेकंड फिगर में भी आपको वो सर्कल्स लग रहे हैं बिकॉज वहां पे आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से नीचे को देख रहे हो, ठीक है। तो आप इस कंटेनर के ऊपर आप खड़े हुए हो और बिल्कुल उसके नीचे की तरफ देख रहे हो तो यहाँ आपको सर्कल ही नजर आ रहे हैं ऊपर से, और इस तरह बॉल को बिल्कुल एक आपके पास एक बॉल है घर पे, उसके आप ऊपर से देख रहे हो, आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट नजर आता है दिस सर्कल, आपको साइड ही नजर आते हैं। ये थर्ड जो आपको फिगर उसने शो की हुई है वो साइड से शो की हुई है, वो साइड से आपको बता रहे हैं कि अच्छा दिस एक्चुअली लुक लाइक दिस, इसलिए वो इस तरह से हेमिस्फीयर है। उसने आपको बताया भी हुआ है ना, सो वी हैव hemispherical balls here that have diameter 7 centimeter that fit into each of those holes. तो उसने आपको words के अंदर भी बताया हुआ है कि वो असल में वो hemispheres हैं and they're not actually circles. Does that make sense? Okay, so you have to look at the description as well, क्योंकि उसने description में आपको clearly वहाँ पे बताया हुआ है that this is a hemisphere. So let me actually use a bigger figure here, like this. Okay, so now let's look at this pyramid. So there's a we have this volume of pyramid given. Remember मैंने आपको कहा था कि pyramid के केस के अंदर स्फीयर में और कोन में इनके फॉर्मूलाज आपको दिए होते हैं, बाकी फॉर्मूलाज आपको नहीं दिए होते। सो पिरामिड और स्फीयर के और कोन के वॉल्यूम्स आपको गिवन होंगे जनरली व्हेन यू नीड देम। अच्छा, द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर्स, अच्छा वो आपके पास ये, लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है दैट हैज these three sides A, B and C. इसके साइड्स क्या हैं? A, B and C. Got three sides of this equilateral triangle, and you are given these lengths जो आपके पास VA, VB, this is also A, this is VC, that is also A, आपको तीन लेंथ्स दी हुई हैं और आपको बताया हुआ है कि ये जो नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी भी जो लेंथ्स हैं they are also 8. So 8 centimeters is the length of this equilateral triangle. जो नीचे वाली ट्रायंगल है B में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे ABC. This is the base of this pyramid ABC. ठीक है, this is the base of the pyramid ABC और इसकी लेंथ क्या है सारी? इसकी लेंथ भी सारी 8 सेंटीमीटर्स है। ओके, एक तो आपको बेस की लेंथ दी हुई है और फिर दूसरा आपको दिया हुआ है जो ऊपर वर्टेक्स है। सो रिमेंबर वी थिंकिंग ऑफ दिस एज अ 3D फिगर। अगर मैं इसको ना शेड कर दूं, इट माइट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये जो अंदर वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको, दिस इज द बेस, जो मैं ग्रे में यहाँ पे शेड कर रहा हूँ थोड़ा सा। दिस इज द बेस ऑफ द फिगर, ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ द फिगर, बेस ऑफ दिस पिरामिड। ये जो V है ये आप समझें कि V इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ये 3 डायमेंशंस के अंदर है। तो ABC अगर जमीन पे पड़ा हुआ है तो V जो है वो हवा के अंदर है, ठीक है, V इज above the floor. Now V is vertically above this point F. ये एक पॉइंट है यहाँ पे F, जिसके बिल्कुल ऊपर आपका वो पॉइंट V है, ठीक है, this is what we have. अच्छा, वो क्या कहता है? Calculate the surface area of the pyramid. इस पिरामिड का आपने surface area figure out करना है। अच्छा, इसमें ना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो है सांस मैंने कॉपी किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट नहीं था। उसमें फर्स्ट पार्ट में उसने मोस्ट लाइकली आपसे क्या कराया होगा? इस ट्रायंगल के एरिया निकलवाया होगा। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट, ठीक है, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। इफ यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, have a triangle like this, so let's say something like this. It's an equilateral triangle. It's an equilateral triangle like this. इसकी साइड जो है वो कितनी है? 8, 8 and 8.
इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपको पता है. व्हाट कैन यू डू टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? सो ये इसने पहले पार्ट में कराया होगा, तो यहाँ पे मैंने कॉपी नहीं किया. बट लेट्स से आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट हैज ऑल द साइड्स इक्वल व्हिच हैव लेंथ्स 8. हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? एनी आइडियाज इन दिस? आपको पता होना चाहिए किस तरह निकाल सकते हैं एरियाज. Perpendicular height in Pythagoras. Okay, yeah, so that's one idea. So one idea is कि आप यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो right here, perpendicular. अब क्योंकि ये equilateral triangle है, equilateral triangle में क्या होता है, अगर आप perpendicular इस तरह ड्रॉ करते हो, it divides these lengths into equal parts. तो ये 4 हो जाएगी लेंथ एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी लेंथ 4 हो जाएगी. ठीक है. अब आप Pythagoras यूज करके क्या कर सकते हो, इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो. ठीक है, हाइट फाइंड कर ली, तब बेस 8 और वो हाइट यूज करके ट्रायंगल का एरिया फिगर आउट कर सकते. So that's one possibility. Yeah, so that can work. So let me show you how that will be done. So you'll say 4 square plus height ka square is equal to 8 square using Pythagoras, right? So 8 is the perpendicular, 4 is the base, 8 is the hypotenuse. अगर हम ये triangle consider करें left side वाली, तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी. So that's 64 minus 16. 64 minus 16 क्या होता है? That's 48. तो 48 का square root, that will be h. फिर आप area find कर लो. That's just half into base into height. तो half into 8 into square root of 48. यहाँ से आपके पास area आ जाएगा. That turns out to be 27.7. 27.7 इसका area आता है इस triangle का. This is one way to think about this. Another possibility is, आपको पता है it's an equilateral triangle. Very good. So half into 8 into 8 into sine of what? Sine of 60 degrees. Why? Because it's an equilateral triangle. क्योंकि equilateral triangle है, equilateral triangle में angles भी equal होते हैं. All the sides are equal and all the angles are also equal. So that will be the quicker way. आपके पास दो sides है, उनके दरम्यान वाला angle है. You just say the area of this triangle is going to be half into 8 into 8 into sine of 60 degrees. Okay, and that will give you some result as well. So that's 64 divided by 2 into sine of 60. And what I get from this is the same thing, 27.7. Okay, so that just use the calculator to check that. You also have 27.7 from here. You could also do that. Okay, ये areas ने आपसे पहले part में कराया होगा. ठीक है. Now once you have this area, how do you calculate the surface area of the pyramid? Remember, surface area को हमने किस तरह define किया था? It's the area of all the faces of that shape. जितनी भी faces हैं उस shape के, उन सबको आपने add कर लेना उनके areas को. अब कितने faces हैं इसके? एक तो इसकी base है. That's one face. एक उसकी base है. ठीक है? What other faces do we have? We've got one face here, VBC. एक ये triangle है. We've got one face here, VAC. This is another triangle. And then we have another angle on the back side, that's VAB. ये तीन triangles हैं, और ये सारी triangles equilateral हैं, because वो सारी lengths 8 हैं, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, base में भी सारी lengths 8 हैं. So we have 4 equilateral triangles like this. अब इसको 4 से multiply कर दोगे बस. Total surface area, that's going to be 4 multiplied by 27.7, and that will give you the result for this. That's the total surface area of this pyramid. ये आपके सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हर साइड के ऊपर एक बेस है और 3 साइड्स के ऊपर हैं, उन सबको आपने तो टोटल 4 ट्रायंगल्स विद द सेम एरिया, सो दैट्स 110.85 or you can say 110.9. that is the total surface area of this pyramid. Okay, is this clear? Is this clear to everyone? Okay, good. Now, in the second part of this question, I will stick to this slide. The second part में वैसे बता देता हूँ. उसने पूछा है वॉल्यूम फाइंड करें इसका, इस फिगर का वॉल्यूम फिगर आउट करें, पिरामिड का वॉल्यूम. Okay, so how do you figure out the volume of this pyramid? Let's think about that now. इसका वॉल्यूम कैसे फिगर आउट करें? Erase all of this. अब देखिए उसने सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या है इस फिगर का. Let's think about that now. Volume of pyramid क्या होता है? ये उसने दिया हुआ है ऊपर.
1/3 into base area into height. So now the problem is we have to find the base area. The base area तो हमारे पास है पहले, that's ABC. We already know the area of the triangle. That is just this base area is basically 27.7. मैं पहले निकाल लिया हुआ, ठीक है. The only problem is this height. Height चाहिए हमें किसी तरह से. Height क्या है? Height is perpendicular height from the top of the pyramid to the base. So that's this VF. VF जो है ये आपकी height है. Remember 3 dimensions के अंदर जब भी आपके पास कोई इस तरह vertical line होती है, that makes a 90 degrees here with all the horizontal lines. नीचे सारी lines के साथ 90 degrees बन रहा होगा. VFB, VFA ये भी 90 है, VFB भी 90 है, VFE भी 90 है, सारे 90 के एंगल्स बनेंगे इस पॉइंट F के ऊपर. F के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं with V, VF के साथ जो भी एंगल्स होंगे बाकी they will all be 90. वो सारे 90 होंगे, ठीक है, because ये vertical है. So let's see if we can use that information to find the height somehow. VF हमें चाहिए, उसके बगैर तो हम नहीं फिगर आउट कर सकते कि हमारे पास उसका क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा. हाइट चाहिए होती है हमें उसके लिए. तो लेट्स फिगर आउट हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ VF. अच्छा, VF के लिए अब एक तरीका क्या हो सकता है, वी कैन थिंक अबाउट दिस ट्रायंगल हियर लाइक दिस. अगर हम ये ट्रायंगल इस तरह के यूज करें, I would make that red. रेड में इस तरह बना. अच्छा नहीं, उसमें मतलब हमारे पास लेंथ नहीं होगी, could actually use this instead. और इसमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, we will have this perpendicular, we have this hypotenuse, वो है, और ये बेस में लेंथ निकाल सकते हैं किसी तरह से. बेस वाली लेंथ हमारे पास कहाँ से आएगी, यूज कर सकते हैं. अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसके बगैर हम ये कर सकते हैं कि इसके दरमियान वाली लेंथ निकालें, वो आ जाएगी, तो फिर हमारे पास ये दोनों आ सकते हैं using that. अच्छा, let's think about this. So we have this equilateral triangle that looks something like this. ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है. अब यहाँ पे हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई इधर, that I may be missing. इसके फर्स्ट पार्ट में मुझे देखने दें, इसके पिछले पार्ट में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऐसी जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. So equilateral triangle is 5 centimeters. I'm just looking at the previous part of this, just searching for that. Just give me a few seconds. The equilateral triangle of 8 centimeters. Okay, so I think I found that. उसने ना पिछले पार्ट में आपसे ये भी चीजें कराई हुई हैं. So let's actually do that as well. यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ पिछले 2 पार्ट्स, वहाँ पे नहीं आ रहे थे.
So let's complete this question before we end today. Yes, Manal, so we can find that perpendicular. लेकिन उसके साथ साथ हमें ना एक और चीज भी चाहिए होगी, because that is not, so this perpendicular is different from this VF. It's different from this VF. So let's do the first part of this. तो मैंने पहले इसका कर दिया कि शायद इसके बगैर हम कर सकते, लेकिन वो important है यहाँ पे, will be used here. So let's do that, and then you'll understand how it follows from that. So this was actually the first part of this question that you see here on the screen now. This was the first part. सबसे पहले ना उसने आपको एक equilateral triangle इस तरह से दी हुई थी, ABC triangle off side 8 centimeters. ठीक है. We had D, E that are the midpoints of AC and BC. AC and BC, these points are given, or intersection point दिया हुआ, that is F. So this was the information that was already given to us earlier. इसने कहा था area of triangle find करें. Area of triangle हमने भी find किया, that turned out to be 27.7. So we figured this out already. ठीक है. So उसके बाद it said show that AFB is equal to 120 degrees. We have to show that this angle here, AFB, this is 120 degrees. ये angle आपने show करना है कि ये 120. So let's see how we can show that this is 120. Now think about this. If this whole angle, since it's an equilateral triangle, we know that this whole angle is 60. Or another possibility is, yes, we can also do it this way. We can say this angle here is 60. Angle at C, that is 60. Agar angle at C is 60, we know कि midpoints पे जब भी आप इस तरह से join करते हो equilateral triangle के अंदर, a line coming from B to the line AC 90 बनता है यहाँ पे. Line coming from A to the line to BC, यहाँ पे भी perpendicular बनेगा अगर ये midpoint से pass कर रहा होगा. So we can say the angle ACB is 60 degrees. ठीक है. Using that, हम क्या find कर सकते हैं? The angle that is BFE. BFE angle निकाल सकते हैं. That is going to be 360. Remember quadrilateral के अंदर, अगर मैं इस quadrilateral को consider कर रहे हैं, CDFE इस पूरे quadrilateral को, angle total कितना होता है? 360. 360 में से हम minus कर देंगे 60. Minus 90, minus 90. What do we get from that? We get 120 from that. DFE angle is 120. अगर DFE angle 120 है, तो इसका मतलब ये है, इसका जो opposite angle होगा, that is also equal, vertically opposite angles. So AFB, therefore, is also 120 degrees because they are vertically opposite. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास आ गया. ये angle, this is 120 degrees. Okay, so this is now known. अच्छा, इसके बाद इसी के next part में वो कहता है calculate AF. Find AF. AF आपको figure out करना. ठीक है. AF कैसे निकालें? Now think about this now. AF आपको length चाहिए. How can we figure that length out? You see, you can use, so there could be multiple ways of thinking about this. One possibility could be कि आप यहाँ पे ये right angle triangle use करो, the smaller one, that is ADF. ADF. I'm going to draw that here. The triangle आपके पास, that is ADF. Then D is the midpoint. Since D is the midpoint, that means this length here is going to be 4. Length कितनी आ गई? 4 आपके पास. जो ऊपर वाला angle है, that is 120 degrees. If that angle is 120 degrees, that means जो नीचे वाला angle होएगा, वो कितना आएगा? That is 60 degrees. This angle here is 60 degrees. ठीक है. आपको AF चाहिए. You can use trigonometric ratio. कौन सी ratio use करेंगे यहाँ पे? 90 के opposite. Hypotenuse है हमारे पास. What about this 4? Is this the base or the perpendicular? Is 4 the base or perpendicular?
4 आपकी base है या perpendicular? 4 is your perpendicular, right? Because 4 is opposite to the angle 60 degrees. 60 के opposite है, जो opposite side होती है, वो perpendicular होती है. What we can do is we can say sine of 60 is equal to perpendicular over the hypotenuse. That's 4 divided by the hypotenuse. यहाँ से क्या आएगा? हमारे पास hypotenuse आ जाएगा. That is AF. Hypotenuse क्या हो गया? 4 over sine of 60. And we can get that value from here. 4 over sine 60 को देख लेते हैं क्या होता है? 4 divided by sine of 60. That is 4.62. 4.62. So the length AF therefore is 4.62. ठीक है? ये calculation ना उसने आपसे पहले करवा ली. You have this length AF that is 4.62. ठीक है? अच्छा, now that we have that length that is 4.62, AF is 4.62. अब हम वापस आते हैं इस फिगर के ऊपर. So what do we have here? We've got some information. We know that if we draw a perpendicular here like this, we draw this perpendicular from V to F. AF हमने निकाल लिया हुआ पहले. AF कितनी है? The length AF is 4.62. ठीक है, उसने पहले आपसे निकलवा ली हुई है. This is 4.62. Now you've got a right angle triangle. This is V. This is F, sorry. This is V. We've got a right angle here. This is A. We've got the lengths there. The lengths are 4.62 and 8. आप VF निकाल लोगे उससे, Pythagoras यूज कर लें. VF का स्क्वायर plus 4.62 का स्क्वायर is equal to 8 का स्क्वायर. And you will get VF from this. VF आ जाएगा, that is 8 square minus 4.62 का square और उसका square root, that is 6.53. Once you have this vertical height, VF आपके पास आ गया. Now you just have to apply the volume formula. हमने इसके next part में volume calculate करना था. Volume is going to be 1 over 3 into the area of the base. Base is the triangle ABC, that is 27.7, multiplied by the height, that is 6.53. And that will give you the volume of that pyramid. 1 divided by 3 into 27.7 multiplied by 6.53. And that turns out to be 60.3 centimeter cube, the volume of the pyramid. The volume of the pyramid, that's given by this. Is this clear? Is this clear to everyone? Okay, good. Now let's do the last part of this and then we will end the session. इसके last 2 parts करते हैं. If you have any questions after that, if you have any other mensuration related questions, you can also let me know about them. We can discuss them. Or for Thursday, Friday, Sunday, we will do yearly papers or yearly classes. हमारी Zoom पे होंगी, remember. So we will complete the earlier paper and we will also be working on 2018 papers after that. So let's look at part C of this. हमने इसका volume तो figure out कर लिया. That was the previous part. Now let's look at how we can do the rest of the 2 parts. Just copy that here. यहाँ पे platform पे थोड़ा सा it's a slow process of moving to the next question. It takes a few seconds. It's much easier on Zoom. Okay, so we have this pyramid that is geometrically similar to VABC. So there's another pyramid now. इसको हमने P कहा है. It is geometrically similar to the earlier pyramid जो हमारे पास VABC था, उससे similar है. Its volume is 1 over 64 of the volume of VABC. Okay, similar figures के अंदर remember volume का क्या relationship होता था? We used to say V1 over V2 is equal to L1 over L2 whole cube. And this was the relationship for similar figures. We have to find the length of an edge of V. Now,
लेट्स गो बैक टू दैट फिगर। हमारे पास इस फिगर के अंदर एक एज की लेंथ कितनी थी? If you look at this pyramid, one edge, every edge was basically 8 centimeters. सारे edges जो थे, that was 8 centimeters. They were 8 centimeters. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है? 1/64 is the ratio between their volumes. ठीक है? हम let's say pyramid P को हम कहते हैं, this is our pyramid 1. VABC is our pyramid 2. So we have 1/64 that is equal to L1 over 8 का whole cube. ठीक है? हमने सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर क्या किया? We had this relationship between their volumes 1/64 और लेंथ के दरम्यान में हमारे पास L1 हमें नहीं पता, इस वाले पिरामिड की लेंथ हमें नहीं पता, दूसरे पिरामिड की लेंथ कितनी थी? 8 थी, 8, उसका क्यूब यहाँ पे करें। ठीक है? We just take the cube of the side, देखते हैं यहाँ से क्या आता है हमारे पास। We get, I will take this to this side, इसको हम क्यूब लेते हैं दोनों साइड, उस साइड का। We have L1 cube divided by 8 cube. 8 cube कितना होता है? 8 का cube is 512. That is equal to 1/64. ठीक है? 5 and 12 उस साइड पे जाएगा और तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? L1 का क्यूब is equal to 512/64. 512/64 that is 8. ठीक है? L1 का क्यूब हमारे पास आ गया 8. तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? That is just 2. That is the value of the length that we have here. एक एज जो होगा हमारे पास P का, that will be 2 units. Okay. अच्छा नहीं, cube root of 8 is not that. Sorry about that. So that's not. Or is that correct? Yeah, so that's correct actually. So हमारे पास L1 की वैल्यू आती है, that is 2. ठीक है? तो एक एज जो हमारे पास P का होगा, that is 2 units. ठीक है? अच्छा, then it says in part 2 of this, a pyramid that is identical to P. अब remember, similar का मतलब होता है कि उसके शेप सिमिलर है, उसके एंगल सारे सेम है, जरूरी नहीं है कि उसकी लेंथ इक्वल हो। आइडेंटिकल का मतलब है इट्स एग्जैक्टली द सेम, सो इट्स कॉन्ग्रुएंट। इसकी लेंथ भी सारी सेम है, इसके एंगल्स भी सेम है। आइडेंटिकल मतलब होता है इट्स एग्जैक्टली द सेम। इट्स रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 4 vertices of the ABC. State the number of faces of the new solid. Now that's quite a tricky question. हमारे पास VABC एक फिगर थी पहले, VABC एक फिगर थी। Now think about this. उसके कितने faces थे पहले? कितने faces? Let me draw that figure here, or let's actually go back to that figure again. इस फिगर पे हम वापस जाएं अगर, और let me just draw that here roughly. अच्छा, आपने क्या किया है? E की तरह का एक पिरामिड वहां से रिमूव किया है from each of the 4 vertices. Now remember, आपको पता होना चाहिए vertices क्या होते हैं, faces क्या होते हैं। So in this figure that you see here, the pyramid, आपके face, आपके vertices कौन कौन से हैं? The vertices are these corners, V, A, B, C. These are the 4 corners that we have. ठीक है? How many faces does this figure have? Faces होते हैं ये जो आपके पास ये पूरे areas हैं, हमने areas calculate किए थे ना पहले। This is one face, VABC, this is one face. Another face is this, VAC, this is another face. Another face is the back, on the back there, that's VAB, ये वाला face, and then this is the base. This is the 4th face. Initially हमारे पास कितने faces हैं? Initially हमारे पास 4 faces हैं। ठीक है? इनिशियली हमारे पास कितने फेसेस हैं? 4 फेसेस हैं। तो उसके बाद क्या होता है? वो कहता है ये एक कॉर्नर को रिमूव करके ना, हर कॉर्नर को इनफैक्ट रिमूव करके, वी हैव प्लेस्ड अ पिरामिड देयर दैट इज द सेम शेप, दैट इज आइडेंटिकल टू
द पिरामिड पी जो उसने दूसरा पिरामिड वहां पे शो किया था उसी तरह का पिरामिड यहाँ पे। क्या मतलब यहाँ पे सी आपने यहाँ से रिमूव कर दिया कॉर्नर, यहाँ पे आपने क्या किया वो एक पिरामिड यहाँ पे अटैच कर दिया उसके साथ। होगा क्या, ये जो लाइंस आ रही है यहाँ पे अगर मैं सी के पास बनाऊं, सी के पास ना फॉर इंस्टेंस इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस नाउ, दिस वाज बी, दिस वाज वी हियर समवेयर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा था कहीं से। अब वो वर्टेक्स रिमूव हो गया, वो पॉइंट रिमूव हो गया, उस पॉइंट की जगह क्या हुआ है, हमने वो पिरामिड फिक्स कर दिया उसकी जगह पे, ठीक है। अब वो पिरामिड जो है दैट इज गोइंग इनसाइड दैट बिगर पिरामिड, उसका जो कॉर्नर होगा ऊपर वाला वो कॉर्नर इसके अंदर की तरफ होएगा और बाहर हमारे पास क्या होगा, एक इस तरह की शेप बन जाएगी लाइक दिस। So उस कॉर्नर पे instead of having a vertex we get something similar to this. If I were to draw that again, we get something that is similar to this. It's easier to explain this particular part. I could show this to you on a video, but this is what happens कि इसके 3 faces थे, इसके 4 faces थे ना इस pyramid के, यहाँ पे आके इस तरह से लग जाएगा और क्या होगा, आपका एक एडिशनल फेस आपके पास आ गया इस पिरामिड की वजह से, एक आपका एडिशनल फेस यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर आ गया। इनिशियली आपके पास कितने फेसेस थे, हैड 4 फेसेस इनिशियली। अब जब आपने एक कॉर्नर रिमूव करके एक और पिरामिड यहाँ पे लगा दिया उसकी जगह पे, यू गॉट 1 एडिशनल फेस एट दिस पॉइंट। यही चीज आपने बी के ऊपर भी की, you did the same thing at the point B and you did the same thing at the point A. चारों vertices के ऊपर, चारों corners के ऊपर you did exactly the same thing. तो आपके faces कितने बढ़ गए, 1 2 3 4, आपके 4 faces यहाँ पे और increase हो गए and in total now you would have 8 faces. यहाँ पे corners की बजाय आपके पास ये इस तरह से triangles आ रही होंगी इन corners के ऊपर। Does that make sense? तो आपको जो total faces आएंगे यहाँ पे, this is going to be 8 faces. That's 4 initial, 4 आपके पास जो पहले थे faces, उसमें चारों corners के ऊपर जब आपने वो pyramid P लगा दिया, आपके 4 faces और add हो जाएंगे and you get 8 faces in total there. Yeah, so this is actually quite tricky. So remind me about this on Thursday because we will have a class on Zoom on that day. So it will be easier to explain in a video perhaps कि वो किस तरह से exact situation है. So let me try to draw a better figure if I can. It's hard to visualize actually. So let's go back there again. और मैं क्या करता हूँ? I'll actually just copy that figure again here. We'll just end after this. Next class में paper discuss करेंगे, but let me just let me copy that figure here again. Okay, so this is the figure that we have. This is the pyramid that we have. अब इस pyramid में क्या हो रहा है? इसके corners से we are removing the vertices. The corners are being removed from this. ठीक है? इसके वजह से होगा क्या? Initially हमारे पास क्या था? We had 4 faces of this figure. So we had 4 faces. We had this face, ACB, VBC, we had VAB, right? And we had this base that was ABC. So you understand that we had 4 faces initially. 4 faces initially, right? Then we are removing one face, removing every corner. Every corner is being removed. उसकी जगह आप एक पिरामिड लगा देते हो. उस पिरामिड की वजह से उस पिरामिड के बेसिकली 3 फेसेस उसके अंदर चले जाते हैं. One face is visible from the outside. One face is visible from the outside. तो
हर vertex के ऊपर हमारा एक face increase कर जाता है, because instead of a vertex there, we instead have one face. So +1 +1 +1 +1, because of each of those vertices, A की जगह भी वो कर दिया, B की जगह भी वो कर दिया, C की जगह भी वो कर दिया, B की जगह भी वो कर दिया. In total, we end up having 8 faces. Now, how does this exactly happen? कि छोटा vertex, छोटा pyramid वहां पे जाके लगता है कि उसका एक face सिर्फ रह जाता है. That's the key thing here, that to be able to visualize that. But that's what happens at every single vertex. Okay, get it. Okay, that's good. So that is what is happening here. Okay. So आपके एक face increase हो जाता है वहाँ. All right, so we stop here for today. So if you have any other questions on mensuration, let me know that you found tricky while you were doing practice. Otherwise, we will end it here. And on Thursday, we will be doing May-June 2020. No, so May-June 2019. So let me write that down here. May-June 2019, paper 2-2. We're going to complete that paper. Okay? We will complete this paper on Thursday. Okay? And on Friday, we will start October-November 2018, paper 2-2. Okay, so keep this in mind. You should be attempting these papers before coming to class. ताकि फिर class में जब हम practice करें, it's easier for you to understand what we're doing. So you should be attempting. You should have attempted those papers before the class. तो इंशाल्लाह Friday को next paper start करेंगे और Thursday को उससे पहले हम ये paper complete करेंगे. Those classes are going to be on Zoom. You already have the link posted in the discussion board on this group. आप वहाँ से वो class join कर सकते हो. So बाकी तीनों classes हमारी Zoom पे होंगी. Monday और Tuesday को it's going to be on this group. All right, so we stop here then. I'll see you again on Thursday. Allah Hafiz. If there are no further questions, we will meet again on Thursday, inshallah. Allah Hafiz.